Hello, everyone. I hope you all are doing really well. Welcome to the session 2 of Chapter 7. So, overall, this is going to be the eighth session, but Chapter 7 being it a bit big, I had divided it into two sessions. मतलब पहला session already कुछ दिन पहले आ चुका है और ये दूसरा session है. So I hope that you guys are actually following up with all the sessions and also doing the exam kit and the test your understandings as I have suggested you earlier in the sessions क्योंकि test your understandings आपको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर रहा है मैं तो वैसे भी like I'm going to do question answer session after this particular class. After this class, the next video which is going to come up is going to be depending on the question answers and also a bit of a revision of what we've completed till now. Okay, let me do one thing. I'll complete chapter 8 also, means next session I'll put for chapter 8 because that also comes under economics only. That also comes under the pestle analysis only. So chapter 7 we'll complete, chapter 8 we'll complete, and after that we'll have a revision session of the first 8 chapters and also the question answers, like what type of question answers are expected in these first 8 chapters. I'll do it in the next session. So I hope that you guys will be able to follow up with it, and I hope that you guys are completing these sessions on par, and even if possible you guys have booked your examination for somewhere in the month of July. That is highly preferred, that book your exam for the month of July, or you know you have time to book the examination also. It's no hurry for you right now. Like suppose you want to give your examination next week, you can book that examination. And if you want to know any help on that for registration and stuff, then you can reach out to me over WhatsApp, and I'll help you out with the registration process. All right. So let us just go ahead with this macroeconomics where we ended in the last session. Like here in macroeconomics, if you just see what is the factors, land, what do we get out of it, क्या मिलता है आपको उससे, that's rent. Or what is the major required factors of production, या फिर macroeconomics बोलो. Macroeconomics will be dealing a lot with the country, like how's the country doing, how are the countries across globe doing, उसके policies क्या है, उसके policies के dependent पे वो country कितना grow कर रही है. That's what we are looking out for. Like let's just see land as an example. Land and rent. So that's one of the factor of production. Now, when we move forward, let's just take this, let's just go through it and then come back here and have a proper explanation about it. जैसे देखो कि आप कोई कंट्री में, मतलब any country you want to set up a business and you want to get started, or you want to know that how is that country performing. तो उसकी land value कितनी है, how is the growth happening there, is it affordable or is it on the expensive side. That we can get to know about it from the rent of that particular place. The rent, if suppose it is more, it means that more people are desiring to stay there or want to move there and stay there or work there or make factories there, इसलिए उसका rent high होगा. That's one of the factor of production which you need to consider if you are moving in there or you're going to start some production out there. Then comes in is labor. अगर labor आप मतलब like for example, if you just see in here that India has one of the most best skillful labor. Now labor का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मजदूर जो काम कर रहे हैं, labor in the sense working population, working people. Now how good they are and what good wages we can give them. So when compared to United States and India, people living in India, their expenses, their expenditure compared to the United States is less. So the wages paid or the salaries paid to the employees can be a bit less when compared to someone in the US. Like in US, if there is an employee to be hired, he should be receiving a minimum pay of around $2,000 per month. So
It's like around $7 to $8 per hour. So he's going to receive somewhere around 2,000. That's what is the minimum expense. The same $2,000, if you put it in here, that's somewhere around more than 150,000 rupees, 150,000 rupees per month. That's a really big salary in India. That's a really big salary, and there that's a basic salary. So what happens here is that there's a lot of work which is outsourced to India or to developing nations who have, that working population, so that they can work for it and at a lesser price. So that's also a factor to be considered. Then capital interest, what are the exchange rates happening, what are the cost of capital, what is the rate of interest, matters a lot. And then entrepreneurship is that how good is the market, are the consumers having power to purchase, or are they, like we are going to talk about it in the aggregate demand and stuff, that how good the consumer is having the power to purchase and stuff. Are people understanding what value they are going to get from the money which they've spent? Then entrepreneurship can be promoted a lot in there. So these all stuff a government should focus on, so that they improve these, attracts more people, attracts more revenue for the government and the nation, and the economy of that particular nation grows together in the sense everybody's in there, grows with that economy growing. Now, moving forward, scarce resources. Now, what do we do with these scarce resources? The resources which are required for factors of production, or the resources which are required for production, for in factories, in construction, or for education, all the resources which are required, they are scarce all the time. Most of the time, they are scarce. Now, when they are scarce resources, what do you need to do? You need to come up with plans, and you know you should have, like in management accounting, we have that what is that called, stock out loss kind of a concept, where you plan out and see that you don't run into a loss just because you don't have the product ready with you. You don't run into losing out sales just because you don't have the products ready with you. In the same manner, the resources are scarce, but you can have an optimum utilization of these resources. Like if you just see in here, if you see some geographies of countries which are really really small, you can say that it's like what can they manufacture, वो क्या बना सकते हैं उधर. But because of that small country, they are able to grow fast. Like, let us just take an example of Dubai. Everybody knows that, okay, it's a good example that they have oil. Because of that oil, they sold oil, and they purchased everything which is required. So Dubai and the Gulf country is doing like that. Let's take an example of a small country like Bangladesh. Really good optimum utilization of their resources. They know what they are good at, and they are concentrating on that. In fact, one of the biggest textile producers right now and growing, booming industry is in the Bangladesh. Being a small country, they have scarce resources, they have economic problem, they had economic problems. Being a new nation also, like in 1970s only, it came into that government formed. They are growing, and you see, India has much more better resources, you can say, but it's that big, that's not that controllable because of that big. And there are a lot and lot of issues going on, which should actually not be an issue, but still it is an issue. Just it is an issue which is not required only to be issue. For example, if we just talk about the political regime right now in the country, all those matters which actually don't have an impact on the economic growth are being discussed a lot. There are factors like if you just see in here, if we just looking towards the religious problems, there is a huge sentiment behind it.
but do not understand the fact that if it's your religion, you follow it, you do whatever you want, but that should not be something which is stopping the country's growth, but that is actually becoming a factor to stop the country's growth. So with those talking about scarce resources, we went off topic, but still that's something to understand, that if you concentrate, the biggest problem is not this biasness, or someone saying right or someone saying wrong. The biggest problem is education. And if everyone has good amount of education, good amount of understanding, then these type of problems won't be looked into further. In fact, you will understand that that is actually not a problem. I hope that someday it will be like, take it easy, it does not matter. आपके बोलने नहीं बोलने से कुछ फर्क पड़ता नहीं, लेकिन what I feel so, what I want so, like suppose अगर आप किसी को गधा बोल दो तो वो गधा बन तो नहीं जाएगा, and it is on him to take it. Like if he just leaves it and says that's मतलब मैं बहस करके मैं अपना मुंह खराब क्यों कर, just leave it बोल दो तो that's it, you can move forward, but does not happen. Talking about scarce resources, coming back in here, or let us just talk about this particular macroeconomic policy. अब macroeconomic policy चाहती क्या, मतलब हर कंट्री चाहती क्या, चाहती है कि वो इकोनॉमिकली ग्रो करे. They want the trade of this country with other countries. Like आप अपनी कंट्री में कुछ ऐसे बनाओ और उसको बाहर बेचो, और कुछ ऐसी चीज जो आप बाहर ऐसे बना रहे हो which is not available in our country, we buy that but in less quantity, not more. ज्यादा क्वांटिटी में बेचना चाहते हो, खरीदना थोड़ा कम, तो एक्सपोर्ट्स ज्यादा करना चाहते हो, इंपोर्ट थोड़ा कम. और इकोनॉमिकली जो आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हो, व्हाटएवर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, if it is going inside or it is sold outside or inside also, not a problem, but sale should happen. In that sale, what is happening? The consumer is having the power to purchase. When consumer is having the power to purchase, then automatically those businesses will grow. If those businesses will grow, then the GDP and overall the economy will grow. That's what every country wants. Point number one. फिर आता है लो इन्फ्लेशन, मतलब कि महंगाई कम हो. महंगाई को कम करना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा, जैसे पेट्रोल का दाम अभी 110 115 कुछ है, तो उसको कम करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को थोड़ा कम करना चाहते हैं. लेकिन देखो, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब इकोनॉमी का ही प्रॉब्लम है ये. इट इज अ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी. एंड व्हाट इट इज, जब आप चाहते हो कि लोग अच्छे से काम करें, उनकी कमाई बढ़े, एंड यू वांट देयर अर्निंग पावर टू इंक्रीज, तो सपोज आपके पास पैसे ज्यादा आएंगे, तो क्या करेंगे आप? यू विल स्पेंड इट आल्सो मोर. नाउ व्हेन यू स्पेंड इट आल्सो मोर, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन विल इंक्रीज. आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट हियर? तो ये जो है, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ आपको हाई चाहिए. अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हाई चाहिए तो उसी के साथ बढ़ेगा क्या? इन्फ्लेशन. तो ये एक प्रॉब्लम है. अब फिर देखो, हाई एम्प्लॉयमेंट. आप जब हाई एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं, व्हेन वो पीपल आर एम्प्लॉयड, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, देयर परचेसिंग पावर इंक्रीजेस. जब उनकी परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी, तो फिर इन्फ्लेशन कैसा लो रहेगा? इन्फ्लेशन भी उसी के साथ बढ़ेगा. आई गाइस गेटिंग इट? So these are contradicting. You want economic growth, you want low inflation, you want high employment, you want sustainable balance of payments. Sustainable balance of payments. Balance of payments in the sense, आपके जो imports है, imports का मतलब आप जो बाहर से खरीद रहे हैं वो थोड़ा कम हो, और आप जो बेच रहे हो which is exports वो ज्यादा हो. That's what you want. More of exports, less of imports. और जो भी पेमेंट्स करना है वो टाइम टू टाइम हो जाए, और थोड़ा सा मतलब बैलेंस पे करने की जगह ना रहे, रिसीव करने की जगह रहे, या फिर थोड़ा एक बैलेंस में मेंटेन रहे, विच इज कॉल्ड सस्टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. अब यहाँ पे नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, इफ यू जस्ट सी इन हियर, हाई एम्प्लॉयमेंट अगर चाहिए आपको, तो फिर ये इन्फ्लेशन लो कैसा होगा? अगर एम्प्लॉयमेंट लो है, इकोनॉमिक ग्रोथ लो है, तो इन्फ्लेशन भी लो हो सकता है. लेकिन ग्रोथ हाई चाहिए,
एम्प्लॉयमेंट हाई चाहिए तो इन्फ्लेशन भी हाई होगा। आप लोग उसका कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं ना, समझ आ रहा है ना आप लोग को? आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड। इफ यस तो फिर ये वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने मतलब दोस्तों के साथ जो 12वीं का एग्जाम अभी अभी दिए हैं या फिर एसीसीए करने की इच्छा रखते हैं, या फिर उनको एसीसीए के बारे में बताओ क्या है ये। Let us see how it moves forward. Now, moving forward, level of business activity in the economy. If suppose you've already done economics in your 11th and 12th, तो आपको ये सब मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। मतलब सिलेबस में भी बस 3 ही चैप्टर, 25 चैप्टर में से 3 चैप्टर इकोनॉमिक्स के हैं, तो पढ़ाना तो मेरा काम है, लेकिन और अच्छे से कैसा पढ़ा सकते हैं और अच्छे से रिलेट करके कैसा इसको पढ़ा सकते हैं, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। अब एग्रीगेट डिमांड आपका कैसा बढ़ेगा? आपका डिमांड एक कंट्री का डिमांड कैसा डिपेंड करता है? जैसे कि पहला हो गया कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हो गया, या फिर एक बिजनेस शुरू करने के लिए कॉन्फिडेंस। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और बिजनेस शुरू करने से पहले व्हाट यू विल सी द स्टेबलनेस इन द इकोनॉमी। मतलब कि अगर मैं ये शुरू कर रहा हूँ काम, तो फिर क्या सेल होगा? मैं जो बेचना चाह रहा हूँ, विल दैट बी सोल्ड और नॉट? विल देयर बी कस्टमर्स हु आर हैविंग पावर? कस्टमर्स का पावर का मतलब कस्टमर के हाथ में पैसा। मतलब कस्टमर आएगा, दुकान देखकर जाएगा नहीं, कस्टमर आएगा दुकान में, पैसा भी रहेगा उसके पास, खरीदेगा भी, और फिर वो चीज लेकर जाएगा, विच from which he'll get value from, and I'll get my resources rotated again. So is that happening or not? In that country people are having that money or not? मतलब उतना पैसा लोग के पास है या नहीं? In India there's a huge population, मतलब, and that's a really really big advantage which should be used towards growth of the country. That should be there. जैसे कि सो मेनी थिंग्स, जैसे कि मैं अभी ज्योग्राफी पॉलिटिक्स के बारे में तो उतना बात करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन एक कंट्री को ग्रो करने के लिए व्हाट इज द वन थिंग व्हिच एवरीबॉडी कनेक्ट्स विथ, दैट शुड बी देयर। एंड व्हेन देयर इज वन थिंग व्हिच एवरीबॉडी कनेक्ट्स विथ, then that unity forms. Now when that unity forms, then there is growth in the economy, then there is support also in the economy. अब जैसे यहाँ देखो कि कैपिटल है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या, what do they want? They want to promote people, promote businesses to get started. They want to promote organizations to set up more branches. They want organizations to invest more in the country. They want external organizations to come to the country and invest in here. Do they want it? Yes, they want it. Now what will they see? They'll see the market. मतलब के who are the consumers? Are the consumers having power? मतलब easily जाके वो लोग खरीदते हैं या नहीं, या फिर खरीदने के लिए सोचेंगे कि बिकेगा या नहीं? Just think about it. इंडिया को बोलते हैं कि काइंड ऑफ नॉट दैट इकोनॉमिकल सुपर पावर नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स अ रियली रियली बिग कंज्यूमर मार्केट। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, एक मोबाइल फोन हर घर में है, हर घर में है, और हर एक आदमी के पास भी है। एवरीबडी हैज मोबाइल फोन नॉर्मली, एंड दैट टू स्मार्ट मोबाइल फोन। Now, when everybody is having a smart mobile phone, why not someone in India has actually manufactured a mobile phone which is smart enough, which can compete with iPhone, Samsung, or even the mid-range? There's not a mobile which is being manufactured here. There are mobiles which are coming from outside and being sold here. Economy को अगर बढ़ाना है तो you should have the level of business activity in the economy को अगर बढ़ाना है तो everybody should work in that flow. Everybody should work in that flow. It's not just one or two. Are you guys there with me? So moving forward in here now, talking about the trade cycles. अब trade cycle शुरू कैसा होता है?
इट स्टार्ट्स विथ अ रिसेशन, या फिर बोलो कि एट अ प्लेस वेयर देयर इज नो मोर सेल्स, या फिर सेल्स नहीं चल रहे हैं. लाइक इफ आई जस्ट टेक दिस एज अ ग्राफ, recession is somewhere here. You go down further more to trough. ट्रफ मतलब कि खाना खाने के लिए भी खाना नहीं है, पानी के लिए भी पानी नहीं, पीने के लिए पानी भी नहीं है. Worst situation in an economy. And then slowly it moves towards expansion. And when it is going towards expansion, it comes towards its peak. मतलब ये आ गया पीक. और पीक के बाद क्या होगा? फिर वही रिसेशन, ट्रफ, एक्सपेंशन चलते ही रहेगा. सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ साइकिल विच गोज ऑन इन बिजनेस. और वो नॉर्मल है कि आप देयर आर प्लेसेस वेयर कुछ काम है नहीं, एंड देन कुछ भी जैसे बहुत ज़्यादा परेशानी है, एंड देन इट गोज ऑन टूवर्ड्स एक्सपेंशन. मतलब कि बिजनेस मिलता है, देयर इज लॉट ऑफ प्रोडक्शंस हैपनिंग, डिमांड इज देयर, एंड देन यू कम अप टूवर्ड्स द पीक एंड देन गो डाउन एंड देन गो अप एंड डाउन. तो ये जो अप एंड डाउन का जो है, इसमें ऐसा नहीं कि आज रिसेशन, कल ट्रफ, परसों एक्सपेंशन, ऐसा नहीं. इट टेक्स years एंड years टू गो ऑन. मतलब in years of expansion, in years of it will be in its peak. So it is depending on businesses to business on how to survive their organization. How do you take care of your organization? Because this is a type of stuff which will be there every time. Like suppose जैसे कि रिसेशन आने वाला है, रिसेशन तो हर 15 साल में आएगा ही आएगा. ऐसा नहीं है कि वो नहीं आने वाला था. तो ये जो रिसेशन आने वाला है, वो रिसेशन को कैसे मैनेज करते हैं आप? हाउ डू यू मैनेज दैट पर्टिकुलर रिसेशन इज योर वर्क विच यू डू एट द टाइम ऑफ योर पीक. मतलब आपके एक्सपेंशन और पीक में आप ऐसा काम करना ताकि आपका रिसेशन आसानी से निकल जाए. दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द इफेक्ट ऑफ की इकोनॉमिक इश्यूज. मतलब इकोनॉमिक इश्यूज यहाँ पे कैसे है, जैसे कि स्टैग्नेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. स्टैग्नेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा है कि आप थोड़ा सा ग्रोथ नहीं हो रही है आपकी. स्टैग्नेशन इज लाइक स्टैंड स्टिल, एंड देन इकोनॉमिक ग्रोथ इज growing further ahead. What are the problems which can come in here into business or the economy as a whole? Is like stagnation to the economic growth. Then it can be inflation, the prices are rising and rising and rising. Then again a big problem can be unemployment. People are not getting that jobs, or people are jobless in that particular place or that country. And then balance of payments, you have a lot of deficit. You have a lot of payments to be made and they are still under collection, or you have something to be received that is still under collection. It is taking time to be received. तो ऐसे में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आपके पास पैसे है तो भी आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि इट इज स्टिल पेंडिंग. या फिर सपोज आपको किसी को पे करना है, लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब हम सब बोलते हैं ना कि आज मेरे पे बहुत उधार है एंड स्टफ, या मेरे से मतलब जनरली बोलते हैं कि अरे कर्जे हैं, कर्जे में डूबा हुआ है. तो आपको बता दूं, सबसे ज्यादा कर्जे में अगर कोई डूबा हुआ है तो वो है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वो कैसे है सर, वो तो इकोनॉमिक सुपर पावर है एंड स्टफ. नहीं, वो सबसे ज्यादा कर्जों में डूबा हुआ है. अब जैसे आपको बता दूं कि डेट सीलिंग या फिर डेट लिमिट, आप कितना डेट बोरो कर सकते हैं उसका एक लिमिट होता है. तो यूएस हर साल वो डेट सीलिंग को, ओके, डेट सीलिंग या फिर डेट लिमिट, सीलिंग इसलिए बोलते हैं कि बस ये टॉप पे पहुंच गया, इसके ऊपर और नहीं जाना चाहिए. तो आप पैसे बोरो करते 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 डेट सीलिंग जो है उसको हर बार जो है सो बढ़ाते जा रहे हो, लिमिट इंक्रीज करते जा रहे हो. उससे क्या हो रहा है, द गवर्नमेंट इज हैविंग अ ह्यूज डेट. और वो कैसा पे करेंगे? इट्स बाय द टैक्स पेयर्स मनी. और यहाँ पे लेट मी जस्ट एड ऑन टू यू इज दैट
You guys can go over YouTube, मतलब ये सेशन के बाद सर्च करो यूएस डेट सीलिंग क्या है कि ये यूएस का डेट, व्हाट इज द डेट फॉर यूएस, सर्च करो, देखो कितना डेट है उनके पास। वो लोग अपना डेट बढ़ाते जा रहे हैं, इंडिया के पास भी उतना नहीं होगा जितना उनके पास है। तो the question is, how are they going to repay it, and why are they requiring that type of a debt? Is because of their economic policies. अब जैसे कि कोविड के टाइम पे हर एक को हम कुछ $1000 देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट सपोर्ट देंगे लोगों को, some or the other medical facilities we are going to provide to people. तो ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसी से मतलब पॉलिसीज आते हैं ताकि लोग वोट जीते, मतलब दोस पीपल कैन विन दैट वोट और दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट कैन कम। ये मेरे हिसाब से दिस इज अ पब्लिक व्यू, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आप खुद देखो जाकर कि ये क्या हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, यू हैव अ लॉट ऑफ पेमेंट्स टू बी डन, पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, और आप उसको पेंडिंग 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 बढ़ाते जा रहे हो कि हाँ भाई देंगे देंगे देंगे, और थोड़ा थोड़ा करके देते रहते हैं, and it's not happening. They have to do something or the other to come over that type of particular debt issue. Okay, the debt trap which is there. Really, debt is something which will spoil the economy or spoil the business, if I have to just say it on an individual basis, कि अगर आपका बिजनेस को जो है बेकार होना है तो फिर debt is something which is लेवरेज, रिस्क, और वो एक ऐसी चीज है कि बिजनेस में आना नहीं चाहिए। हाईली हाईली रिकमेंड करता हूं मैं कि एनीबडी हु इज डूइंग बिजनेस, ट्राई टू अवॉइड डेट, ट्राई टू अवॉइड इंटरेस्ट पेमेंट्स। दैट्स रियली रियली बैड, बहुत बहुत बुरा है। सी दैट्स व्हाट इट इज, राइट? के द सोसाइटी the society at large, what does it want? They want you to get into a job. The soon you get into a job, they want you to get married. The soon they want you to get married, they'll say you should have a bike तो फिर भी ठीक है, उतना टाइम लगता नहीं। They'll say you should have a car की EMI पे करते करते 5 साल लगेंगे। You should have a house की EMI पे करते करते जिंदगी निकल जाएगी। So when you have that car EMI, house EMI, and all that stuff, which your furniture EMI, why will you leave your job then? You'll not leave your job. You'll love your job at that time. क्यों? क्योंकि that job is paying all those expenses which you want. I don't know why I'm talking about all this stuff, but these are like real things. और इकोनॉमिक इश्यूज भी इसी की वजह से। अब जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन इन 1980s एंड स्टफ, और द ग्रेटेस्ट डिप्रेशन 2008 का डिप्रेशन जो था, डिप्रेशन इन द सेंस रिसेशन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, रिसेशन, एंड दे आल्सो कॉल इट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी बोलते हैं उसको। तो जो रिसेशन आया उसकी वजह क्या थी? दैट वाज लोन्स वाज द बिगेस्ट इशू इन दैट। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 1980s में there was a problem with like there was a bank. If a bank had to give a loan to a person, to any person, okay, if a bank has to give to a loan to a person, what they'll do is they will have a proper security check over that particular person. मतलब कि अगर ये पैसे वापस हमको नहीं दिया तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो वैसे बैंक का ही होता था। तो बैंक क्या करता था कि whenever we are giving a loan to someone, हालांकि उसका सेल ही होता था वो, मतलब बैंक्स के लिए तो you're giving away loan means you're selling loans because you're going to get interest in return. So what happened is they used to have a proper security check over that particular person and look into it, like, is he eligible to repay back us our money? And if they are eligible, then they used to give a loan, otherwise no. अब यहाँ पे क्या हुआ, there was one thing interesting, another policy came in here, okay, there was one insurance company, to be more specific, this insurance company,
यहाँ पे क्या हुआ, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और एक पॉलिसी आप जो जाओ वापस रिसर्च करो थोड़ा अपने तरफ से भी, मैं आपको बस जल्दी जल्दी बता रहा हूँ. This particular organization came up to the bank and said that if suppose this particular person is not paying, or any person who is not paying, they can take an insurance from us. Okay, either this people or you can take an insurance from us, and in the event of non-payment, then you can claim for the insurance. ऐसा ही ना, जैसे कि एक्सीडेंट अगर हुआ तो फिर आप जैसे कि कार इंश्योरेंस होता है, कार इंश्योरेंस में क्या होता है, आप गाड़ी अपनी अच्छे से चलाओ, लेकिन सपोज अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फिर इंश्योरेंस विल कम एंड इंश्योरेंस का क्लेम कर सकते हैं. वो इंश्योरेंस का क्लेम करने के लिए आपको प्रीमियम्स पे करना होता है स्टार्टिंग के टाइम पे. तो वैसे ही अगर बैंक का लोन अगर कोई पे नहीं कर रहे हैं तो फिर दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन विल कम एंड पे इट. फाइन. अब यहाँ पे क्या हुआ, लेट अस जस्ट सी इन हियर. अब बैंक जब किसी को भी लोन अगर इश्यू करना है, और if suppose this person is not paying the loan on time, then this particular insurance can come and pay to the bank. तो बैंक के ऊपर प्रॉब्लम नहीं था. अब ये एक नॉर्मल चल रहा है अगर हर कोई अपने हिसाब से अच्छे से काम करते रहे. बैंक ऐसा भी करे कि जो है सो वो पर्सन को जो आप लोन दे रहे हो आप अच्छे से उसको क्रॉस चेक करें कि ही इज एलिजिबल और नॉट. अब क्या हो गया, दिस पर्सन, if he is not paying to the bank, insurance will pay. Now there is a loophole here. What happened is, बैंक जो अच्छे से क्रॉस चेक करता था कस्टमर को, वो कस्टमर को क्रॉस चेक करना थोड़ा सा लूज कर दिया. मतलब क्यों? क्योंकि अगर वो पे नहीं करता है तो इंश्योरेंस तो दे ही रहा है ना हमको पैसे. So what happened? Slowly, this particular scrutiny and stuff was avoided. क्यों? क्योंकि रिस्क बेरर बैंक नहीं था, रिस्क बेरर कोई और आ गया. अब उससे क्या हुआ, people used to get loans, or people who are not eligible to get loans, they also got loans. क्या करे वो लोग उस लोन से, घर बनाते गए. This happened in US and across nations also, जहाँ पे ऐसे लूपहोल्स ऐसे हुए, घर बनाना शुरू कर दिए लोग, घर बनाना शुरू कर दिए, पेमेंट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उनके पास वो काबिलियत नहीं है. दे आर नॉट दैट, दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर जॉब्स, और दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर बिजनेसेस, because they did not go through that tight security check. तो उससे क्या हुआ, ये लोन्स पे नहीं हो रहे थे. ये जो इंश्योरेंस कंपनी थी ये थी लिस्टेड. अब जब ये लिस्टेड थी तो स्टॉक एक्सचेंज में इसकी वैल्यू आगे बढ़ते जा रही थी. क्यों आगे बढ़ते जा रही थी इसकी वैल्यू स्टॉक एक्सचेंज में? क्योंकि ज्यादा लोग को लोन मिल रहा था, और जितने लोग लोन ले रहे थे वो लोग इंश्योरेंस भी ले रहे थे. तो सेल इंश्योरेंस का ज्यादा हो रहा था तो स्टॉक मार्केट उसकी ज्यादा हो रही थी. जब स्टॉक मार्केट में उसकी प्राइस ज्यादा हो रही थी तो लोग उसके अंदर इन्वेस्ट भी कर रहे थे. लेकिन जब लोन रीपे नहीं हो रहा था तो फिर इंश्योरेंस को आके पे करना था. अब इंश्योरेंस पे करेगा भी तो कितने का करेगा, सबका तो पे नहीं कर सकता. अब जब सबका पे करना है उसको, तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे आया एक क्रैश which happened in 2008. तो ये एक सडनली 2008 में हुआ क्या? नो, इट डिड नॉट हैपन सडनली इन 2008. इट हैपेंड लाइक, मतलब एक 20-25 साल से एक बबल फूल रहा था. 20-25 साल से रूल्स एंड रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ रही थी, और लास्ट में जाके वो फट गया. तो ये जो पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसीज है एंड स्टफ है, ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. आपको आप जब बनाते हो तो इन सब चीजों को देखना जरूरी होता है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है. 2005 में IMF में there was one Indian who said that we are on a brisk of a major recession coming. And people said, और जो बाकी के लोग थे, आए वो बस नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा रिसेशन कुछ नहीं है, आपको प्रॉब्लम की ऐसी कोई जरूरत नहीं है. लेकिन आया रिसेशन, and that was none other than Mr. Raghuram Rajan. He said it in front of all major economists that there's a major recession coming, and we should be aware of it, or we should be doing something or the other for it. लेकिन सबको नहीं था. एंड
Acha, I've just talked about few things. There are many more things behind it. Many more things. If you can watch this particular movie, if it is there available, I don't know whether it will be there available till now or not. This one, ye kya? Insider Job. This movie is kind of a documentary, Insider Job. Go ahead, watch it. Let me know how did you find it. मैं तो नहीं हूँ प्रोड्यूसर उसका, लेकिन आप लोग बताओ कि आप लोग के क्या इनपुट्स थे उसमें. All right, moving forward. Economic policy options. Fiscal policy क्या है? Taxation of the economy, taxation of the country. आप उसको कैसे प्लान कर रहे हैं? How are you going to give them rebates, मतलब कि टैक्स माफ कैसा करने वाले हैं, कितना टैक्स लागू होगा, कितना आप how much support you're going to give them in relation towards the taxation of that particular country, of those particular people. What is the monetary policy? Monetary policy in the sense कि exchange rates क्या रखने वाले हैं. What is going to be the the interest rate on the loans. वही जो policies जो हम उसके बारे में बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले. How is it going to be? How is that going to impact businesses? That's what is the economic policy options. Moving forward, economies theories in here. Classical theory economy क्या बोलती है कि जो बिजनेसेस है उनको बस फ्रीली फ्लो होने दो, वो लोग खुद ब खुद चीजें बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, इकोनॉमी खुद ब खुद स्टेबल रहेगी, अच्छे से चलेगी. कौन बोलता है ये? क्लासिकल थियरिस्ट. Whereas the Keynesian view, what it says is that सिर्फ अगर कैपिटलिस्ट के हाथ में दे दिए, if you give it all in those hands, they are never going to reach equilibrium. They are not going to reach customer satisfaction and stuff. Government needs to come and intervene in their work and try to come towards a equilibrium point जहाँ पे growth होगी organizations की, and when organizations are growing, the economy and the country will grow. And then comes the monetarist view. यहाँ पे ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत सप्लाई साइड से, लाइक they are towards the supply side. They want more support on that side. If you support on the supply side, then the economy will run good. That's what the monetarist view is. Now talking about unemployment. अब unemployment है तरह तरह के तरीके के. Number one है cyclical employment. अब cyclical employment, unemployment ऐसी चीज है जो regularly आती है. It comes in a cycle. Like you are going to be unemployed in the month of January, February, क्योंकि बहुत सर्दी रहती है वो टाइम पे. Like in US, January, February, if suppose I am a boating company, boating company in Chicago, or I just do that tours over the boat. I just take the boat, take it to the Michigan lake, and I'll show you around the Lake Michigan, and लोग yachts में उसके अंदर पार्टी करते हैं. In January, February, that particular Michigan lake आदि froze हो जाती है सर्दी से. तो वो जो ships, वो जो boats रहते हैं, वो पानी में ही नहीं रहते, उसको घर को लेके जाते हैं. That's unemployment at that particular time. That's cyclical, मतलब normal है. फिर cyclical unemployment को आप ऐसे भी बता सकते हैं कि right now, if you remember this particular trend, recession, trough, expansion, peak. Recession और trough का जो time है, वहां पे आपको unemployment ही रहेगी. And that also you can call it as cyclical unemployment. ठीक है. Then talking about frictional unemployment. Frictional unemployment, suppose आप एक जॉब छोड़ रहे हो और दूसरी जॉब ज्वाइन करने वाले हो, तो उसमें जो गैप है, मतलब 1 से 2 महीने का गैप है, उसमें आप अनएम्प्लॉयड है. दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फिर है स्ट्रक्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. अगर सपोज आपको कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है मार्केट में और आपको वो नहीं मालूम है और उसकी वजह से आप अनएम्प्लॉयड हो,
या फिर सपोज आप नोकिया बनाने के एक्सपर्ट थे, नोकिया मोबाइल फोन, इफ यू गाइस डोंट नो, नोकिया वाज अ ब्रांड, अ बिग ब्रांड in mobile phone. Today I don't know where it is, but at that time that was the only mobile phone. Before 2005, 2006, 2007 और इवन 8, 9, 10, 11, 12 तक भी, 12 तक ज्यादा था, उसके बाद नहीं. नोकिया was the go to mobile phone for everyone. तो उसके एक्सपर्ट्स भी बहुत थे उसको बनाना करना एंड स्टफ. So those people who were good in manufacturing and that stuff for Nokia, आज उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट है अगर वो लोग एप्पल और सैमसंग कैसा बनाते हैं स्टफ की नॉलेज नहीं है. सो दैट्स अ स्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. तो वो जो सॉफ्टवेयर है, जो आईटी जो सॉफ्टवेयर है, अगर वो अपडेट हो गया और वो अपडेटेड सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसे काम करते हैं आपको नहीं मालूम है और उस वजह से यू आर आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स स्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. So that's number one. Then comes seasonal unemployment. Seasonal unemployment वो पहला example, वो boating company in Chicago, Michigan Lake, वहां पे जो है आप जनवरी फरवरी दिसंबर जनवरी फरवरी में बिल्कुल नहीं जा सकते, पानी ही नहीं रहता, बर्फ बन जाता वो. तो आपके अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है. या फिर आपके पास आम का बाग है, जैसे ये हो गया, गर्मी खत्म हो गई और बारिश शुरू हो रही है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू डू नथिंग देयर, जस्ट मेंटेनेंस थोड़ा, लेकिन उतने पैसे नहीं आएंगे आपको टाइम पे. देन कम्स रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट. अब ये रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इट्स जस्ट दैट you are not able to get you know you are not able to meet your daily expenditure. Even though you are earning, but you are not able to meet your daily expenditure. That's a real wage unemployment. So these all are the types of unemployment. You guys can go through it. You guys can get questions also from this. ठीक है. फिर है इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन कैसे कैसे होता है? पहले हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब कि आप कोई चीज की डिमांड करते रहो और उसकी डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप कोई भी प्राइस हो वो प्राइस देने तैयार हो. डिमांड पुल इन्फ्लेशन. अब जैसे कि आप मूवी देखने जा रहे हो, कोई you're going to watch a movie and that's going to be a really big movie star, like for example Johnny Depp is Pirates of the Caribbean part 6 or part 7, whatever it is, is going to come and hit the theaters. But first of all, let me just say that Johnny Depp does not disappoint us on entertainment. He always tries to entertain us. Even the court trial case, though it was a major issue in his life, but still it was an entertainment for all those people watching it. So that is actually a movie only, we can say. But still, there's a movie going to be announced or there's a movie going to be released and you are a really big fan of it. You demand a lot for it. What will happen? The price of that ticket still slightly increase because they also want to earn more. For example, at the time of year end, New Year's time, or any festival time, Eid, Diwali, koi bhi festival ke time pe, you can see the flight rates. If you are going from one place to another, flight ticket rates, ticket fares are really, really high. डिमांड के वजह से. फिर आते हैं हम लोग कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट पुश. पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो फिर ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा. दैट विल बी अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. अब पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन तो हर इंडस्ट्री में है, सो दैट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन will be there. Then imported inflation, you are bringing something from outside and because of that the inflation is rising. That is also possible because maybe the factors of production was really expensive in that particular country and you've bought it here and the cost will go up. Then monetary inflation, that exchange rate, interest rate, because of that inflation is increasing. Monetary inflation. Then
बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तो आप लोग को समझ में आ तो गया होगा कि इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, मोर इंपोर्ट्स डेफिसिट, मोर इंपोर्ट्स मतलब खरीदी ज्यादा आमदनी कम, so you have to have more of inflow, it means inflow of cash, that means exports, आप ज्यादा चीज बेचो और पैसे अंदर लेकर आओ, that's exports, and then comes imports. Now what can be a better strategy to come towards a balance of payments, मतलब थोड़ा एक नॉर्मल बैलेंस बनाए रखने के लिए, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग स्ट्रैटेजी, तो जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें थोड़ा कम करने की कोशिश करो ताकि आपका सब डेफिसिट से सरप्लस पे आ जाए. देन एक्सपेंडिचर स्विचिंग स्ट्रैटेजी, instead of you buying something from outside by giving cash, instead of exchange it with some goods, exchange it with some different amount of payments or different time of payments, that's type of strategy in there. So I hope that this particular session, okay, this session also has come to an end. थोड़ा लंबा था chapter 7 और थोड़ा अलग भी करने की कोशिश करा मैं. I tried to talk more about some real life situations. अगर आप लोग को समझ आया और आप लोग इसको मतलब अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं इस सेशन को एंड इट्स रियली, अगर आपको समझ आ रहा है और आपको लग रहा है कि ACCA बनाने में, आपको ACCA बनाने में अगर मेरा थोड़ा भी योगदान होगा, या फिर इफ यू फील लाइक आई कैन बी द पर्सन हु कैन हेल्प यू इन योर क्वालिफिकेशन, आफ्टर ऑल इट्स योर स्टडीज, यू पास इट, 100% क्रेडिट आप ही का है, आप ही की तैयारी है, हम बस सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. एंड ये सपोर्ट और हेल्प एक ऐसी चीज है, ये रहे या ना रहे, आप तो क्वालिफाइड बनोगे, आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ोगे. बट इफ सपोज आई एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर सपोर्ट, then you can also support us by sharing this video, by liking this video, subscribing to our channel, sharing with those aspirant students. ऐसे नहीं कि बस हर एक के फैमिली ग्रुप में जो शेयर कर दो वीडियो, ऐसे मत करो. Those students who are actually interested in making a career as an ACCA business accounting finance, उनके साथ आप शेयर करो ताकि ये वीडियो उन्हीं तक पहुंचे जिसको इसकी ज्यादा जरूरत है. ऐसा नहीं कि बस सबको शेयर करो, सबको सुनना चाहिए. Those who are interested, share it with them. और अगर आपको मेरी टीचिंग समझ में आ रही है, आपके पास कोई सजेशंस है, तो ऑलवेज वेलकम, और आपको मैं मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन. ऑलराइट, बाय बाय.